Class 7 NCERT chapter 3rd question 4 what is mean by the following terms। सबसे फर्स्ट आती है हमारे पास रियरिंग। सबसे पहले हम रियरिंग का करेंगे। राइजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स rising of domestic animals like sheep, goat, yak, cow, and buffaloes for commercial purpose such as for milk and fur is known as rearing। डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि शीप, गोट या काउ, बुफैलो, इनका यूज कमर्शियल पर्पज के लिए जैसे कि फॉर मिल्क एंड फॉर फर, उसे हम कहते हैं रियरिंग। इसके बाद सेकंड हमारा आता है, सेकंड इज शेयरिंग। शेयरिंग क्या है? शेयरिंग इज द प्रोसेस of removal of animal hair by using machines similar to those used by barbers। शेडिंग एक ऐसी प्रोसेस है कि जो एनिमल्स के हेयर को रिमूव करती है एक मशीन के थ्रू जो कि बार्बर्स यूज करते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट आता है हमारा सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का मीनिंग है rearing of silkworm to get silk is known as shearing। Sericulture is known as sericulture। सिल्क वॉर्म से सिल्क बनाना, ये है सेरिकल्चर।